Good morning everyone. Welcome to the Gitishree study zone. आज हमने प्लस टू फर्स्ट ईयर साइंस रा फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड रो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करबा को जाउछु. प्रीवियस लेक्चर्स रे आमे कोन सब जानछन ना व्हाट इज लिविंग, फीचर्स ऑफ लिविंग रे सब आमे जानथलु जे को फीचर्स करा शो कले गोटे ऑर्गन गोटे सब्सटेंस आमे ताको लिविंग बोली कहि परिबा. तापर आमे किछि वर्ड्स विषय जानथिलु ना व्हाट इज जेमति कि क्लासिफिकेशन रा माने कोन ना वर्गीकरण करबा. देन तापर आमे जानिथिलु ना व्हाट इज कैटेगरी. ता पूर्व आमे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ विषय रे भी आमे पढ़िथिलु जो थरे आमे जानथिलु कि कार्ल वेस जे के 3 डोमेन्स ऑफ सिस्टम की लाइफ को प्रपोज करथिले. तांको मत अनुसार ए सिस्टम रे तीनटा डोमेन अछि जोटा कि होछि आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा. आर्किया होछि हमर सबुठारो सिंपलेस्ट फॉर्म टाइप रो जो थरे कि आमे तादरी के आमे कोन देखिता को फीचर्स देखिता ना यूनिक बायोकेमिस्ट्री देखिता. तापरे से माने आरएनए फीचर रखि थांती. आरएनए फीचर तांको पाखरे थाए. देन हम माने जानथिलु यूकैरियोटा विषय आमे कोन जानथिलु ना ए डोमेन रे सब यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थांती कि जो जाको आमे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहतो जमन को पाखरे जमनकर फीचर्स कौन था नहीं से मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोजिस्ट कर थांते. देन तांको पाखरे डीएनए भी था. ए डोमेन्स भितर आमे ए डोमेन्स भितर 4टा किंगडम आसी थाला कि हम 4टा किंगडम विषय आमे पढ़िथिलु जोटा कि होची प्रोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमलिया एंड फंगी. देन तापर आमे जानथिलु बैक्टीरिया विषय रे. बैक्टीरिया और आर्किया दीटा similar types because they both are prokaryotes. Then बैक्टीरिया डोमेन भितर किंगडम बैक्टीरिया आसला जोटा कि आमे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कहता. देन आज आम माने बायोडाइवर्सिटी विषय जानिबा ना व्हाट यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी जाना पूर्व फर्स्ट जानिबा कि डाइवर्सिटी रो मीन्स कोन ना. डाइवर्सिटी रो माने होची ना डिफरेंट फॉर्म की वेराइटी. आमे जेति कि सबु भी निज चारि पाखे देखि थाउ सेटा डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी थांते अछंती. जेमति कि आमे गोटे प्लांट्स को देखि नेलु. टेक एन एग्जांपल कि आमे जदि गोटे प्लांट्स को देखि नेलु तांकर वेराइटी टाइप ऑफ स्पीसीज थांती. देन आमे जदि गोटे एनिमल्स को देखिलु तांकर वेराइटी टाइप ऑफ स्पीसीज थांती. सो डाइवर्सिटी रो सिंपल माने होची ना डिफरेंट फॉर्म की वेराइटी ऑफ फॉर्म. सो अभी का डाइवर्सिटी ऑन अर्थ माने होची डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की सब्सटेंस found in earth. So different type of organism की substance found in the earth. Then what do you mean by biodiversity? एथरे दीटा वर्ड आसुची. गोटे होची बायो जोटा होची बायो. देन डाइवर्सिटी एथरे दीटा वर्ड आसुची जोटा कि बायो एंड देन डाइवर्सिटी. बायो माने होची जीवन कि जैव. देन डाइवर्सिटी रो माने होची डिफरेंट फॉर्म्स. फर्स्ट माने होची कोन ना एतिकिरो फर्स्ट माने होची जीवन. देन आउ एतिकिरो माने होची डिफरेंट फॉर्म. विभिन्न प्रकारर जेतिक सब आमे जीव देखि थाउ तांको ही आमे
तांको ही आमे बायोडाइवर्सिटी कही था। सो डिफरेंट टाइप ऑफ plants or animals that is called the biodiversity or different type of organism। एटा सब को हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम ये कहि परिबा कि ऑर्गेनिज्म जति टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखि थाओ आम अर्थ रे ताको हम सब बायोडाइवर्सिटी कहि परिबा। सो देयर आर टोटल 7 million species present on earth according to the Robert Mayer गोटे साइंटिस्ट थिले जो जे कि कही आम अर्थ रे 7 million species present अछंती। देन तापरे आमे कौन जानथिलु ओनली आमे सेतिकी भितरु आमे ओनली केतिकी पाइछु ना 1.7 million to 1.8 million स्पीसीज को आमे डिस्कवर करि परछु। एमाने होचंती डिस्कवर स्पीसीज माने एमान को आमे खोजी सारिछु। सेतरे डिफरेंट आसे पर डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स आसी परंती, प्लांट वेराइटी आसी परंती, बर्ड्स कर वेराइटी आसी परंती। बट आमको केते मिलची ना 1.7 मिलियन रु 1.8 मिलियन स्पीसीज आमे डिस्कवर कर परछु, जोथरे कि 1.25 मिलियन एनिमल्स अछंती आ 0.5 मिलियन केते अछंती ना प्लांट्स अछंती प्रेजेंट। माने टोटल आमे कह गले कि 1.25 मिलियन एनिमल पाइछु आ 0.5 मिलियन आमे प्लांट्स स्पीसीज पाइछु। देन what do you mean by discovered species? So it is like what do you mean by discovered species? Discovered species ro meaning कोन ना न्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स जहाँ जो प्लांट्स को आमे जो नुआ प्लांट्स की न्यू एनिमल्स न्यू स्पीसीज कह पर न्यू स्पीसीज प्लांट्स की एनिमल्स जहाँ भी आम खोजी था ताको आम सब कह स्पीसीज। सो जी भी आम न्यू स्पीसीज खोजी था ताको आम आइडेंटिफाई करवा, देन करेक्ट ग्रुप रे रखिबा, देन ताको आम गोटे सुइटेबल साइंटिफिक नेम दबा को आमे ताको डिस्कवर स्पीसीज कहि परिबा। आमे फर्स्ट से नुआ स्पीसीज को टेकन एनिमल्स हो कि प्लांट्स हो से नुआ स्पीसीज को आमे देखला परे ताको जदि आमे करेक्ट आइडेंटिफाई करि परिबा ताको गोटे करेक्ट ग्रुप रे रखि परिबा, ताको आमे जदि गोटे साइंटिफिक सुइटेबल साइंटिफिक नेम दे परिबा देन ताको आमे डिस्कवर स्पीसीज कहि परिया। सो वी नो दैट there are many species still need to be discovered। आमे जानिलु कि जदि 7 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट अछंती अर्थ रे ओनली 1.7 मिलियन रु 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड होती, देन आमर आउरी भी स्पीसीज बाकी अछंती जोटा कि आमे डिस्कवर करिबा। So we need a branch of a biology which deals with the correct classifications and nomenclature। एथिपाई जति के भी आमे न्यू डिस्कवर्ड स्पीसीज हैला डिस्कवर हब फ्यूचर इन द केस ऑफ फ्यूचर नुआ स्पीसीज फाइंड आउट हैला, न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स करो कि एनिमल्स करो फाइंड आउट हैला, देन ताको तो आमे एमडी ये रे भीतर तो रखी परिबानी ना कोठी भी, तो ताको ठीक से ब्रांचिंग करबा पई गोटे आमको ठीक से गोटे सिस्टम रे रखिबा पई गोटे आमको ब्रांच दरकार।
तो सो तार गोटे ना हो टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स. So we need a branch. So branch name हो taxonomy and systematics. But one got a question raise हो why should we classify the living? कि हमें कौन जहाँ भी हमें फाइंड आउट कलु ताको हमें कौन पाई क्लासीफाए करबा. विदाउट क्लासिफिकेशन रे भी तो चली जाउथबो ना हमें कहीं तो क्लासीफाए करबा बिकज आम ताको क्लासीफाए करबा ताको आम इजी टू आइडेंटिफाई कर परबा. जदि आमको किसी जमती मेडिसिन टाइप रो किसी प्लांट्स दरकार हैला देन ताको आम केमिति खोजिबा. मेडिसिन प्लांट्स करो मेडिसिन ये जो नेचर रे थांती सही नेचर ही प्लांट्स गरा को देखिबा सही स्पीसीज प्लांट्स गरा को देखिबा आम. सो आम ताको इजीली सही स्पीसीज सही प्लांट को सही पर्टिकुलर प्लांट को आम सही ये खोजिले आम पाइबा. देन स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर प्लेसेस. विभिन्न जगार अलग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आम पाई था तो ताको आम बेटर स्टडी कर परिबा. स्टडी ऑफ फॉसिल्स आम फॉसिल्स मानकर भी स्टडी कर परिबा. ग्रुपिंग fourth and necessary why should we classify. Grouping help in study of all type of similarities and dissimilarities. जी भी ग्रुपिंग हमको हेल्प एथिपाई करता है कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हो कि प्लांट्स मानकर स्पीसीज मानकर सिमिलारिटीज आउ डिसिमिलारिटीज नेचर विषय कौन एमानकर कौन नेचर विषय स्टडी कर परिबा. ओके व्हाट डू मीन बाय कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी. द टर्म वाज कॉल्ड टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स ना. सो व्हाट डू मीन बाय टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी कंटेन टू टाइप ऑफ लैटिन वर्ड्स. टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमस माने होची हमर लॉ. गोटे लॉ द्वारा लॉ रे जो स्पीसीज गरा को न्यू स्पीसीज गरा को गोटे लॉ द्वारा न्यू स्पीसीज गरा को लॉ सर्टन लॉ द्वारा अरेंजमेंट करबा को आमे कौन टैक्सोनॉमी कहबा. It is the process of grouping or classifying new species into suitable taxon on the basic feature. एटा गोटे प्रोसेस जो रे कि आमे ग्रुपिंग कर परिबा आउ क्लासिफाई भी कर परिबा. ग्रुपिंग आउ क्लासिफाई कर परिबा काहा को ना न्यू स्पीसीज मानू को कोथिरे ना सुइटेबल टैक्सॉन द्वारा को बेसिस रे ना तांकर बेसिक फीचर्स. एबिका बेसिक फीचर्स माने कौन ना तांकर इंटरनल फीचर हे गला कि तांकर एक्सटर्नल फीचर कि अदर फीचर हो एरा सब होचन कौन तांकर बेसिक फीचर. एक्सटर्नल फीचर माने तांकर मॉर्फोलॉजी देखिबा. इन प्लांट केस माने पेंटानियस कि को टाइप रो. इन एनिमल केस रे से माने जॉइंट लेग्स कि कौन सबू एटा होची तांकर मॉर्फोलॉजी. एंड इंटरनल स्ट्रक्चर रे कौन हे गला तांकर एनाटॉमी के सेल स्ट्रक्चर तांकर सेल रो स्ट्रक्चर कौन एगरा होची तांकर बेसिक फीचर्स. गोटे स्पीसीज रो एगरा होची बेसिक फीचर्स. हाउ डू क्लासिफाई अ न्यू स्पीसीज मानू को आमे केमिति क्लासिफाई करबा. दैट वाज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. बट केमिति व्हाट आर द स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप द स्टेप्स
एटा आ गोटे माने क्वेश्चन रे भी आसी पारे मे बी व्हाट आर the steps of taxonomy. So what are the steps? First one is the characterization. गोटे if a person यदि गोटे person गोटे island को गला then से गोटे से न्यू स्पीसीज को देखिला फाइंड आउट कला न्यू स्पीसीज सेटा से प्लांट रो मे बी प्लांट हे थाओ और एनिमल हे थाओ एनिमल किंगडम रो प्लांट किंगडम रो हे थाओ कि एनिमल किंगडम रो हे थाओ से ताको फर्स्ट देखिला परे से पर्सनटा ताको फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन करिवो देन ताको आइडेंटिफाई करिवो सेटा कहा टाइप रो टिके अछि सिमिलरिटीज कि डिसिमिलरिटीज कहा टाइप रो टिके अछि तापर कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन कर सारा परे ताको पुणी क्लासिफाई करिवो क्लासिफाई कर सारा परे तापर ताको गोटे स्वीटेबल नेम दबो कि आमे ताको जोटा को साइंटिफिक नेम को सेटा से दबो ओके सो द taxonomy the word taxonomy was coined by D. Candle and the father of taxonomy is Linnaeus. एटा मे क्वेश्चन रे 1 मार्क टाइप रो क्वेश्चन रे आसे कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किए एमती पचार देबो सो देन व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिक रो माने कोन सिस्टमैटिक्स रो फर्स्ट थिंग हो जे सिस्टम ऑफ वर्ड और सिस्टमैटिक आसे दिस वाज द मेन वर्ड ए थ्रू ही ए वर्ड आसे सिस्टमैटिक्स रो माने हो जे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ओके ना यार माने कौन हो ना इट इज द प्रॉपर अरेंजमेंट पॉइंट टू बी नोट प्रॉपर अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहार बेसिस रे ना रिवोल्यूशनरी बेसिस रे जो अरेंजमेंट करी थाउ आमे ताकू आमे कौन कहबा ना टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट कहबा ओके इट इज द ओनली क्लासिफिकेशन बट एटा गोटे आमे ओनली आपको आमे क्लासिफाई करना इट इज नॉट एन ओनली क्लासिफिकेशन बट प्लेस अ क्लोजली रिलेटेड टुगेदर सब मीन्स क्लोजली गोटे स्पीसीज एप्स ने नबा कि ह्यूमन ने जबा से क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज गरा अछंती ओके सो एटा ओनली क्लासिफिकेशन कथा नुहे एमा क्लासिफिकेशन भी केमिति करा होची ना से माने तांकर फीचर्स इंटरनल फीचर एक्सटर्नल फीचर्स करा सही करा सब कोन क्लोजली रिलेटेड थिबा दरकार तापर ही हमें ताको क्लासिफाई कर परे गोटे ग्रुप रे सो सिस्टम लिनियस गोटे बुक लिखिथिले बुक रो नाम हो सिस्टमा नेचुराe एटा 1 मार्क क्वेश्चन रे पचारे और एटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क टाइप रो सो आमे कौन जानलु ना सिस्टमैटिक्स रो माने कौन ना सिस्टमैटिक्स रो माने होची टैक्सोनॉमी ताको तो फर्स्ट माने कौन कैरेक्टराइजेशन करबा आइडेंटिफिकेशन करबा क्लासिफाई करबा देन नोमेनक्लेचर ताको साइंटिफिक नेम दबा जोटा कि ताको मैच भी होतबो तार ये सहित कैरेक्टर सहित टैक्सोनॉमी फर्स्ट करबा कहा सहित ना विथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सो टैक्सोनॉमी रो मान सॉरी सिस्टमैटिक्स रो माने हो टैक्सोनॉमी प्लस
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जोटा शो करे. So what do you mean by evolutionary relationship? Evolutionary relationship रा माने, take an example लेनिया amphibians माने करो example. Amphibian, you know it. Amphibians को ठारू ही reptiles आसिचंती. Then reptiles रू ही first आसिचंती birds. माने first नुहे simultaneously भी birds, then mammals आसिचंती. So एमाने कौन closely related species. So birds and mammals are closely related species according to the evolutionary related. Okay. So हमें systematic रो माने कौन जानिलु ना systematic रो माने होची taxonomy plus phylogenetic relationship. Okay. यार माने कौन सिस्टमैटिक रो ना टैक्सोनॉमी करिबा, देन तार कहा द्वारा ना तार फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के इवोल्यूशनरी कहि परबा, इवोल्यूशनरी का. सो आमे आज को टर्म विषय जानलु, फ्यू टर्म्स विषय कौन जानलु ना. फर्स्ट टैक्सॉन विषय जानिलु, तापरे आमे जानलु टैक्सा विषय रे. एटा प्लूरल फॉर्म, दिस वाज कॉल्ड सिंगुलर. टैक्सॉन माने होची जेमति कैट हे गला, डॉग एक्स्ट्रा, एरा सब होची टैक्सॉन. देन तापरे आमे कोन जानिलु टैक्सोनॉमी विषय जानिलु, देन सिस्टमैटिक्स विषय जानिलु. एतिक सब वर्ड्स विषय जानलु. देन क्लासिफिकेशन विषय जानिथिलु पूर्व लेक्चर रे. देन कैटेगरी विषय जानिथिलु पूर्व लेक्चर रे.